Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Today, we're getting into something really fundamental, how governments try to improve health and how we can actually measure if what they're doing works. We'll be using some pretty neat tools from economics. Specifically, we're focusing on maternal health in India, and one big government program aimed at getting more women to deliver babies safely in clinics or hospitals. Our source material for this is a research article hot off the press, published online January 22nd, 2025, in the International Journal of Health Economics and Management. It digs deep into India's Janani Suraksha Yojana, the JSY program. You can think of it as a large-scale policy using cash payments, but with a condition attached trying to nudge behavior to reach safer childbirth. So our mission today: unpack this study, understand the JSY program, what the big national surveys tell us, and try to figure out what really influences where and how women give birth in India, according to this research. It's a deep dive into policy, health, and the power of data analysis. It really is a critical area. Especially in developing countries like India, public spending on maternal health is just vital. The challenge is significant. You still see high maternal mortality rates, and tragically, many deaths are from preventable causes. Things like severe bleeding, infections, high blood pressure, often hitting hardest in rural areas. But there has been progress, definitely. Over the last couple of decades, focusing on prenatal, postnatal care, and skilled health workers has made a difference. Maternal deaths have declined quite a bit. And you can trace some of that impetus back to the UN Millennium Development Goals in 2000. Maternal health was a key focus, and that really spurred on a lot of social welfare programs within India. Okay, let's unpack this historical context a bit, drawing from the study. India's approach wasn't static, right? It evolved. It started way back, maybe 1979, with the Family Welfare Program integrating maternal and child health with family planning. Then 1992 saw the Child Survival and Safe Motherhood Program free services, but the death rate was still worryingly high, something like 424 per 100,000 births. And in 97, the Reproductive and Child Health Program added things like STI prevention. Exactly. And then came the big one we're focusing on. Janani Suraksha Yojana, JSY, launched in 2005. The core idea was that conditional cash transfer give money to mothers if they deliver in a health facility. It's trying to incentivize that specific behavior. And you absolutely have to mention the ASHA's accredited social health activists. These community health workers are crucial boots on the ground, reaching women, providing info, linking them to services. They're central to how JSY works. Now, JSY wasn't the same everywhere. They divided states into high-performing HPS and low-performing LPS based on health indicators. LPS states, needing a bigger push, generally offered higher cash amounts both to the mothers and the ASHA workers helping them, especially in rural areas. Eligibility also differed. In HPS, it was often tied to having a below-poverty line card or belonging to specific social groups, like scheduled castes or tribes. In LPS, it was generally open to all women delivering in facilities. There were also differences in limits, like for how many births you can claim. Okay, so cash incentives, community workers. Sounds like a solid strategy. But the source mentions it wasn't perfect. There were still hurdles. Oh, definitely. Even with the cash incentive, families often face significant out-of-pocket costs. Think transport, maybe extra medicines, diagnostic tests, things the basic JSY payment might not cover. This sometimes meant home delivery still felt more affordable or just more practical for some families. And with any huge government scheme, you hear about implementation issues, maybe complexity in claiming the money, delays in getting paid, sometimes concerns about corruption. Right. So the government saw these remaining cost issues. Yes, and that led to the next major step in 2011, the Janani Suraksha Yojana, or JSSK. This was designed specifically to tackle those out-of-pocket expenses for deliveries in government facilities. It aimed to provide completely free and cashless services. That meant the delivery itself, drugs, diagnostics, even transport back home, and a basic diet during the stay. A pretty comprehensive package. That sounds like a significant improvement. It was intended to be. And then even more recently, in 2017, another program came in the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, PMMVY. This one offers an incentive, around 5,000 rupees, but focused on the first live birth, often paid in installments linked to checkups. It represents maybe a slight shift in focus too, thinking about wage loss for the mother, encouraging rest and breastfeeding,
boosting nutrition, so broadening the scope beyond just getting women into facilities for the delivery itself. And amidst all these programs, the overall numbers did shift dramatically. The source notes institutional deliveries went from, less than 40% around 2005 up to nearly 80% by 2015-16, and climbing still. Exactly, the numbers went up. But that's where the research question gets really interesting. Why did they go up? Was it purely the JSY cash making the difference? Or were other things playing a bigger role by, say, 2015 or 2020? And crucially, did JSY influence where women went? Did it push them towards government hospitals, especially with the free JSSK services, or towards private ones? So teasing apart those effects. Precisely. The study wanted to know, how much did JSY coverage affect the rate of institutional delivery overall? And how much did it affect the choice between government and private facilities? And did this vary between states, between rural and urban areas? Because the context matters hugely. Right, because the decision isn't made in a vacuum. Not at all. It's influenced by so many things. A family's income, education levels, their social group or caste, how far they live from a clinic, what they think of the quality of care there, whether they've talked to an ASA worker, if they even have a mobile phone to get information or call for help. All these pieces interact. And that's what makes the study valuable. It tries to account for that complexity. It looks at both the rate and the choice, uses recent data covering up to 2021, considers those rural-urban differences, and includes factors like interaction with health workers. Okay, this is where we get into the how. For anyone listening who maybe hasn't encountered this before, the study uses econometrics. It sounds complex, but the basic idea is pretty cool, isn't it? It really is. Think of it like this. You have a whole bunch of potential ingredients that might go into a cake flour, sugar, eggs, maybe JSY cash, maybe distance to the shop, maybe how good the baker's education is. Econometrics gives us statistical tools to try and figure out how much each specific ingredient contributes to how the final cake turns out in this case, whether a woman delivers in a facility and where. It helps us isolate the effect of one factor while holding others constant, statistically speaking. So trying to see if JSY itself had an impact separate from, say, rising incomes or better roads. Exactly. So they defined their outcomes, the things they wanted to explain. First, the overall rate of institutional deliveries in each state. Second, the ratio of private versus government hospital deliveries in each state. Those are the dependent variables, right? The things they're trying to explain. Correct. And then they gathered data on all those potential influencing factors, the independent variables. Things like the percentage of women in a state covered by JSY, health insurance coverage, how often women reported interacting with health facilitators like ASAs, the estimated average cost of delivery, the literacy rate of the head of the household, the state's per capita income, the number of Anganwadi centers, those local community centers, as a sort of proxy for local services. Yeah. How many people felt distance was a major problem? The percentage of scheduled tribe population, mobile phone access, and female literacy rates, a whole range of factors. Where did they get all this data? Mostly from India's National Family Health Survey, the NFHS. They used rounds 4 from 2015-16 and round 5 from 2019-21, plus some other government sources for things like income data. And the key is they used what's called panel data. Ah, okay, so not just a snapshot in time. Right. Because they have data for multiple states across 2 different time points. They can track changes within each state over time, as well as compare between states. It gives you a much richer understanding than just looking at 1 year. That makes sense. It lets you see trends and differences more clearly. Precisely. And they use specific econometric models, pooled regression, fixed effects, random effects, and statistical tests to figure out which model best fit the data and gave the most reliable answers about these relationships. In their case, the pooled model seemed to work best after accounting for the variables they included. Okay, enough suspense. After running these models, what did the data actually say? What factors really seem to matter for driving institutional deliveries in this period? All right, let's break down the key findings. First, looking at what increased the overall rate of institutional delivery. A big one was interaction with health facilitators, ASAs, Anganwadi workers. That had a significant positive impact overall, and also when looking separately at urban and rural areas. So that human connection, the awareness building, really counts. It seems so. Higher per capita income also consistently showed a positive link to more institutional deliveries. More money means more ability to access care. Makes sense. What about barriers? Distance. The data confirmed it's still a significant negative factor, especially in rural areas. The further away people feel facilities are, the less likely they are to use them for delivery.
access remains a challenge. And any differences across social groups? Yes, states with a higher percentage of scheduled caste or scheduled tribe populations showed significantly lower institutional delivery rates, particularly in rural areas. This points to persistent inequalities. Maybe cost, maybe distance, maybe other social factors are still bigger barriers for these communities. Interesting. Anything else driving the rate up? Mobile phone access showed a positive link in rural areas, maybe helping with information or contacting help. Health insurance coverage mattered positively in urban areas. And interestingly, the literacy of the household head also had a significant positive impact overall and in rural areas. Household head literacy specifically, not just female literacy. We'll come back to female literacy, but yes, household head literacy showed up strongly here. Okay, now for the perhaps surprising part you hinted at earlier, what about the JSY program itself? Did higher JSY coverage in a state lead to a higher rate of institutional deliveries overall in this 2015-2021 period? This is a key finding. According to their analysis, JSY coverage did not show a statistically significant impact on the overall rate of institutional delivery nationally during this period. Wow. So the cash incentive itself wasn't the main driver anymore for the total number? It seems not. For the rate itself in these later years. Now, this doesn't mean JSY failed. It was likely very important initially in boosting rates and, crucially, raising awareness and changing norms around institutional delivery. But the study suggests that by this later period, other factors, income growth, the work of health facilitators, maybe the free services under JSSK, had become more dominant drivers of the overall rate. The awareness JSY created might persist, leading women to choose institutional delivery anyway, even if they aren't receiving the cash that specific time. So the legacy of JSY might be more important than the ongoing cash transfers for the overall rate now. That's one interpretation the findings point towards. Also, things like the average cost of hospitalization and the number of Anganwadi centers didn't show a significant link to the rate nationally in their models. And female literacy? Female literacy also didn't show a significant impact on the overall rate nationally in this model. The study offers a potential explanation. Decision-making about delivery location in India often involves the husband or male head of household based on other NFHS data. So while female education is vital for many other health outcomes, its direct statistical power in this specific decision might be lessened in their model, perhaps overshadowed by household head literacy or joint decision-making. Okay, so JSY coverage wasn't significantly driving the rate higher anymore, but did it influence the choice between government and private hospitals? Yes, absolutely. Here, JSY showed a very clear and significant impact. Higher JSY coverage was strongly associated with a lower preference for private hospitals. Or, put another way, higher JSY coverage pushed women towards government facilities. Ah, that makes intuitive sense. It does. JSY cash is linked to delivering in an institution, and the JSSK program offers free services specifically in government institutions. So if you're accessing or aware of JSY, the government facility becomes the much more financially attractive, often the default option. Got it. What else influenced that choice? Similar patterns emerged. SEST populations were less likely to use private facilities, likely due to cost. Higher income, health insurance coverage, and household head literacy were all linked to a higher likelihood of choosing private hospitals, possibly reflecting affordability and perceptions of quality, especially in urban areas for the literacy factor. Distance also played a role in rural areas, making private hospitals less likely if they were further away. And were the factors driving choice broadly similar in rural and urban areas? Mostly, yes. The study did find one statistically significant difference in impact. The effect of the SCST population percentage on the overall rate, not the choice, was significantly different between rural and urban settings, highlighting again those deeper rural disparities. But generally, while urban areas have higher institutional delivery rates overall, rural areas saw a bigger jump between the surveys. And government hospitals handle a much larger share of births in rural India, about 76% compared to 62% in urban areas, according to the data used. This is fascinating. It paints a really nuanced picture. So bringing it all together, what are the big policy implications? If you're trying to improve maternal health outcomes based on this research, what's the takeaway? Well, the first big message is that while JSY was likely crucial in initiating change and still strongly directs women towards government facilities, the direct cash payment itself doesn't seem to be the main engine driving the overall rate up nationally anymore. Other factors have taken the lead. So policymakers need to look beyond just the cash. Exactly. The focus really needs to shift, or perhaps intensify, towards those factors that are showing strong statistical links now.
That means serious investment in the quality of government health centers, better infrastructure, enough skilled staff, reliable drug supplies. Since JSY, JSSK are funneling women there, those facilities need to be able to provide good care. It also means doubling down on the human element, supporting and empowering those community health workers, the ASAs and Anganwadi workers, because their interactions clearly matter for awareness and mobilization. And addressing those persistent inequalities. Absolutely critical. Finding targeted ways to overcome the barriers faced by women due to distance, low income, or belonging to marginalized groups like SC/ST communities, especially in rural India. And given the significance of household head literacy, making sure maternal and child health campaigns actively involve men and address the whole family unit seems important. What about managing the load on government hospitals? That's a key point. With more women choosing government facilities, ensuring quality doesn't slip under pressure is vital. The study even floats the idea of exploring public-private partnerships, maybe finding ways to extend JSY, JSSK benefits to accredited private facilities, to expand affordable choices and ease the burden on the public system. And one final point the source raises, don't forget other critical health issues. Anemia among pregnant women actually increased between the two surveys. That needs urgent attention too, perhaps leveraging those same health worker networks for nutrition awareness. Wow, okay, that really was a deep dive. We went from the core problem of maternal mortality through the evolution of India's policies like JSY and JSSK into the mechanics of econometrics and landed on some really specific findings about what's driving delivery choices now. It shows how complex these issues are. Government programs have clearly shifted the landscape, but the picture keeps evolving. Thanks so much for walking us through this research. My pleasure. And thank you for joining us on this exploration. I think what this study really highlights is that policy tools, even powerful ones like conditional cash transfers, have a life cycle. JSY was perhaps instrumental in getting the ball rolling, changing norms, but over time, other underlying factors, basic access, economic well-being, trusted information, tackling social barriers, might become even more critical for sustaining progress. It's a reminder that sometimes the most effective interventions address those fundamental conditions. So for you, the listener, how does seeing this kind of nuanced evidence where a major program's direct impact seems to lessen over time compared to other factors change how you think about designing effective health policies in complex societies? What really drives lasting change? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভারতে মাতৃস্বাস্থ্য এটা তো খুবই জরুরি একটা বিষয়, আর সরকারও এই দিকে বেশ নজর দিয়েছে, অনেক টাকাও খরচ করছে। হ্যাঁ, একদমই তাই। 2005 সালে যেমন একটা প্রকল্প চালু হলো, জননী সুরক্ষা যোজনা বা JSY, মানে সোজা কথায় হাসপাতালের ডেলিভারি হলে মায়েদের হাতে কিছু নগদ টাকা দেওয়া হতো। ঠিক। কিন্তু এই যে টাকা দিয়ে অভ্যাস বদলানোর চেষ্টা, এটা কি সত্যি কাজ করে? আজকের আলোচনায় আমরা একটা গবেষণা দেখব এই JSY প্রকল্প ঠিক কতটা সফল হলো তা নিয়ে। হ্যাঁ, এই গবেষণাটা খুব ইন্টারেস্টিং। মূলত দুটো জিনিস দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এক নম্বর, JSY কি আদৌ হাসপাতালে বা ক্লিনিকে প্রসবের সংখ্যা বাড়াতে পেরেছে, মানে ওই প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব যাকে বলে। আর দুই নম্বর, এই টাকার জন্য মায়েরা সরকারি হাসপাতাল বেশি বেঁচেছেন নাকি বেসরকারি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে মানে NFHS এর ডেটা ঘেটে বেশ কিছু নতুন দিক উঠে এসেছে। আচ্ছা, তাহলে একটু সহজ করে বোঝা যাক, এই যে শর্ত দিয়ে টাকা দেওয়া, মানে হাসপাতালে প্রসব করলে তবেই টাকাটা পাওয়া যাবে, এটাকে তো অর্থনীতির ভাষায় বলে কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার বা CCT। হ্যাঁ, ঠিক তাই, CCT। এর পেছনের আইডিয়াটা কি ছিল খুব সহজ করে বললে? মানে টাকা পেলে মায়েরা হাসপাতালে যেতে বেশি আগ্রহী হবেন, বিশেষ করে যাদের আর্থিক অসুবিধা আছে। আইডিয়াটা একদম এটাই ছিল। যুক্তিটা হলো, হাতে টাকা এলে হাসপাতালে যাওয়ার খরচ, যাতায়াত বা অন্যান্য যে বাধাগুলো থাকে সেগুলো হয়তো গরিব মায়েরা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। একটা আর্থিক উৎসাহ আর কি। ইনসেনটিভ। হ্যাঁ, ইনসেনটিভ। কিন্তু মানে সবচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, গবেষণা বলছে JSY কিন্তু মোটের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার খুব একটা বাড়াতে পারেনি। বলেন কি? এটা তো বেশ আশ্চর্যজনক। সাধারণত তো ভাবা হয় টাকা দিলে লোকে সেই সুবিধাটা নেবে। সেটাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে
শুধু টাকাটাই এখানে মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠেনি। তাহলে কোনটা বেশি কাজে দিয়েছে, মানে মায়েরা কেন তাহলে হাসপাতালে গেলেন? গবেষণা অনুযায়ী দুটো জিনিস অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। এক হলো গর্ভাবস্থায় আশাকর্মী বা অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মায়েদের নিয়মিত কথা বলা, পরামর্শ নেওয়া। আচ্ছা, মানে যোগাযোগটা খুব জরুরি। খুবই জরুরি। আর 2 নম্বর হলো পরিবারের আয় বৃদ্ধি, মানে সার্বিক আর্থিক উন্নতি। দেখা যাচ্ছে মানুষের সিদ্ধান্ত শুধু নগদ টাকার ওপর নির্ভর করে না, তথ্য পাওয়া আর একটু সচ্ছলতা, এগুলোর ভূমিকা অনেক বড়। জেএসওয়াই এর সরাসরি প্রভাবটা এখানে তুলনামূলকভাবে কম। তার মানে কি এই টাকাটা একদমই কোনো কাজে আসেনি? অন্য কোনো প্রভাব কি দেখা যায়নি? না না, তা নয়। এখানে আসল ব্যাপারটা, জেএসওয়াই সরাসরি মোট প্রসবের সংখ্যা হয়তো তেমন বাড়ায়নি, কিন্তু মায়েরা কোন হাসপাতাল বাঁচবেন সেটাই বিরাট প্রভাব ফেলেছে। ও আচ্ছা, কি রকম? দেখা গেছে যারা জেএসওয়াই এর সুবিধে নিয়েছেন তারা সরকারি হাসপাতাল অনেক বেশি বেছেছেন বেসরকারি হাসপাতালের চেয়ে। কেন সরকারি হাসপাতালে কেন? এর একটা বড় কারণ হতে পারে 2011 সাল থেকে চালু হওয়া জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বা জিএসএসকে, যার ফলে সরকারি হাসপাতালে প্রসব, সিজেরিয়ান সেকশন, বাচ্চার 1 মাস বয়স পর্যন্ত চিকিৎসা, এইসবই তো প্রায় বিনামূল্যে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তো জেএসওয়াই এর নগদ টাকা আর তার সাথে জেএসএসকের বিনামূল্যের পরিষেবা, এই দুটো মিলে সরকারি হাসপাতালকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলেছে মায়েদের কাছে। বোঝা গেল। তার মানে একদিকে চাহিদা তৈরির চেষ্টা হলো টাকা দিয়ে, আবার যোগান বা পরিষেবাটাও সরকারি হাসপাতালে সহজলভ্য হলো বিনামূল্যে। দুটো একসাথে কাজ করেছে। একদম। কিন্তু এর একটা অন্য দিকও আছে। কি সেটা? এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শুধু মানুষকে সরকারি ব্যবস্থার দিকে টানলেই হবে না, সেই ব্যবস্থার মান মানে কোয়ালিটি সেটাও ভালো রাখতে হবে। না হলে কি হবে, সরকারি হাসপাতালের উপর চাপ তো বাড়বে, কিন্তু মানুষ হয়তো ঠিকঠাক পরিষেবা পাবে না। ঠিক কথা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এছাড়াও আরও কিছু জিনিস প্রভাব ফেলেছে, যেমন ধরুন বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র কতটা দূরে, বিশেষ করে গ্রামের দিকে, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, দূরত্বটা তো সবসময় একটা বাধা। আর সামাজিক অবস্থান, যেমন তফসিলি জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবেই একটু পিছিয়ে, তাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার এখনও কম, আর তারা মূলত সরকারি হাসপাতালই ব্যবহার করেন। আর শহরের দিকে? শহরের দিকে আবার অন্যরকম। সেখানে দেখা যাচ্ছে পরিবারের যিনি প্রধান তিনি যদি বেশি শিক্ষিত হন, তাহলে বেসরকারি হাসপাতাল বাছার প্রবণতাটা বেশি। তার মানে গ্রাম আর শহরের ছবিটা একটু আলাদা। অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, পরিকাঠামো, সবকিছু মিলিয়ে বেশ জটিল একটা ছবি। ঠিক তাই। এই গবেষণাটা এটাই খুব স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে কোনো সরকারি নীতির প্রভাব সব জায়গায় একরকম হয় না, আর সবসময় আমরা যা ভাবি সেভাবেই যে কাজ করবে তাও নয়। খুব ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে হয়তো একটা প্রকল্প শুরু হলো, কিন্তু তার ফলটা অপ্রত্যাশিত হতে পারে। সেজন্যই যে কোনো পলিসির মূল্যায়নটা খুব দরকার। শুধু গোড়ার লক্ষ্যটা পূরণ হলো কিনা সেটা দেখলেই চলবে না, সমাজে তার মোট প্রভাবটা কি পড়ছে সেটাও বুঝতে হবে। মানে অর্থনীতির বইয়ের তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক তো থাকেই। তাহলে আজকের আলোচনা থেকে মূল বিষয়টা কি দাঁড়ালো? শুধু টাকা দিয়ে মানুষের আচরণ বদলানো, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে, এটা খুব একটা সোজাসাপটা ব্যাপার নয়। একেবারেই নয়। একটা প্রকল্পের সাফল্য শুধু তার প্রাথমিক লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে না। চারপাশের পরিস্থিতি, পরিকাঠামোর মান, মানুষের আর্থিক অবস্থা, সচেতনতা, এই সব কিছুর ওপর নির্ভরশীল। জেএসওয়াই হয়তো সামগ্রিকভাবে হাসপাতালে প্রসবের হার খুব বেশি বাড়ায়নি, কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যবহারে একটা বড়সড় পরিবর্তন এনেছে। আর এই আলোচনাটা শেষে একটা প্রশ্ন রেখে যায় আমাদের ভাবার জন্য। কোনো সরকারি নীতি বা প্রকল্পের সাফল্য আমরা ঠিক কিভাবে মাপব? খুব জরুরি প্রশ্ন। শুধু কি তার ঘোষিত উদ্দেশ্য পূরণ হলো কিনা সেটা দেখে, নাকি সমাজে তার যে আরও অনেক প্রভাব পড়ে, কিছু হয়তো আমরা আশাই করিনি, কিছু ভালো, কিছু হয়তো মন্দ, সেই সবগুলোকে হিসেবে ধরে ভবিষ্যতের নীতি তৈরির জন্য এই ভাবনাটা কিন্তু খুব দরকারি। नमस्ते। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। भारत जैसे देश में मां और बच्चे का स्वास्थ्य ये तो सबसे जरूरी मुद्दों में से है। बिल्कुल, और इसमें अस्पताल या किसी स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित डिलीवरी हो, ये बहुत मायने रखता है। हाँ,
और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 2005 में एक अहम योजना शुरू की थी, जननी सुरक्षा योजना या JSY। जी, JSY ये असल में एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। मतलब महिलाओं को सीधे पैसे मिलते हैं अगर वो कुछ शर्तें पूरी करें। शर्तें जैसे कि अस्पताल में डिलीवरी करवाना? हाँ बिल्कुल, मकसद यही था कि महिलाएं डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचें। तो आज हम इसी JSY योजना को थोड़ा गहराई से समझेंगे एक अहम रिसर्च पेपर के हवाले से। जी, पेपर का नाम है डिमांड साइड फाइनेंसिंग फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सपीरियंसेस ऑफ जनानी सुरक्षा योजना इन इंडियन स्टेट्स। और इसके लेखक हैं कृष्णा नायर, जो IIT खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हैं। और साथ में है प्रोफेसर पुलक मिश्रा, IIT खड़गपुर के ही मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग से। बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर हैं वो। हमें उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली काम है। ये हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है। तो आज हमारा इरादा है कि इस रिसर्च के जो मुख्य नतीजे हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, खासकर उनके लिए जो इकोनॉमिक्स या इस विषय में नए हैं। हम देखेंगे कि JSY का अस्पताल में डिलीवरी की दरों पर और लोग सरकारी चुने या प्राइवेट, इस पर क्या असर पड़ा। और ये सारा विश्लेषण NFHS मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे और पांचवें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। 2015-16 और 2019-21 के बीच का समय। ठीक है, तो JSY के बारे में थोड़ा और बताइए, ये काम कैसे करती है। देखिए, मूल विचार था डिमांड साइड फाइनेंसिंग का। मतलब लाभार्थी को पैसा दो ताकि वो सेवा की मांग करें। ये सप्लाई साइड से अलग है, जहां अस्पतालों को सुधारा जाता है। बिल्कुल, और इसमें आशा कार्यकर्ताओं का रोल बहुत अहम है। वो सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक पुल की तरह काम करती है। हाँ, वो पंजीकरण, जांच, डिलीवरी में मदद करती हैं। राज्यों को भी बांटा गया है इसमें, LPS, HPS। जी, कम प्रदर्शन वाले राज्य LPS और उच्च प्रदर्शन वाले HPS। और भुगतान भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग है। ठीक है, तो रिसर्च का मुख्य सवाल क्या था, चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि योजना तो पूरे देश में एक जैसी लागू हुई, पर हर राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति, वहाँ की जमीनी हकीकत बहुत अलग है। तो ये जानना था कि क्या JSY सच में ज्यादा महिलाओं को अस्पतालों तक ला पाई? हाँ, और क्या इसने लोगों की पसंद को बदला, मतलब सरकारी बनाम निजी अस्पताल चुनने के फैसले पर कोई असर डाला? तो नतीजे क्या रहे? सबसे पहला नतीजा संस्थागत प्रसव की दर पर। यहीं पर बात थोड़ी चौंकाने वाली है। अच्छा? अध्ययन में पाया गया कि JSY का संस्थागत प्रसव की समग्र दर बढ़ाने में उस अध्ययन अवधि में कोई खास महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा। सच में? न ग्रामीण इलाकों में न शहरी? जी नहीं, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा। ये तो अजीब है। तो फिर दरें बढ़ क्यों रही थी? अगर JSY सीधे तौर पर नहीं बढ़ा रही थी तो? असल में दूसरे कारक ज्यादा प्रभावी नजर आए, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या सुविधाकर्ताओं, जिन्हें पेपर में IHF कहा गया है, उनके साथ बातचीत। मतलब जागरूकता और प्रेरणा। हाँ, फिर आर्थिक स्थिति भी एक बड़ा फैक्टर थी, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। और ग्रामीण इलाकों में परिवार के मुखिया की साक्षरता मतलब HLL, और शहरी इलाकों में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज HIC, ये सब दरें बढ़ाने में मदद कर रहे थे। और क्या कोई रुकावटें भी नजर आई? हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधा से ज्यादा दूरी। ये तो स्वाभाविक लगता है। और कुछ राज्यों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति या जनजाति की आबादी का ज्यादा प्रतिशत होना भी एक बाधा के तौर पर सामने आया। अच्छा, तो ये तो हुई दर की बात, लेकिन दूसरा सवाल था अस्पताल की पसंद का, सरकारी बनाम निजी। हाँ, और यहाँ नतीजा काफी दिलचस्प है। बताइए। भले ही JSY ने कुल दर ना बढ़ाई हो, लेकिन इसने लोगों को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों पर तरजीह देने के लिए जरूर प्रोत्साहित किया। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। मतलब प्रेफरेंस शिफ्ट हुई सरकारी की तरफ। जी हाँ, और ये असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखा। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एक तो JSY का पैसा खुद ही सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में डिलीवरी से जुड़ा था। दूसरा, 2011 में एक और योजना आई थी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के। हाँ, JSS के। उसके तहत सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए डिलीवरी, सिजेरियन, दवाएं, जांच सब मुफ्त कर दिया गया। तो इन दोनों ने मिलकर सरकारी अस्पतालों को ज्यादा आकर्षक बना दिया। बिल्कुल,
मुफ्त सेवाएं और ऊपर से JSY का नकद लाभ। तो फिर भी कुछ लोग निजी अस्पताल क्यों चुन रहे थे? कौन थे वो लोग? आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों में जहां परिवार का मुखिया ज्यादा पढ़ा लिखा था, वहां निजी अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही थी। शायद बेहतर क्वालिटी की उम्मीद में। हो सकता है, शायद गुणवत्ता की धारणा एक कारण हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था या जिनकी आय ज्यादा थी, वो निजी अस्पताल का खर्च उठा सकते थे, तो वो चुन रहे थे। और SC/ST आबादी का क्या असर दिखा इस मामले में? जिन राज्यों में SC/ST आबादी ज्यादा थी, वहां निजी अस्पतालों को कम चुना जा रहा था। ठीक है, समझा। अच्छा, शोध में JSY कवरेज में थोड़ी गिरावट की भी बात थी, NFHS 4 और 5 के बीच। हाँ, आंकड़ों में एक हल्की गिरावट दिखी थी। इसका क्या कारण हो सकता है? ये संभव है कि पॉलिसी फोकस थोड़ा बदला हो, जैसे 2017 में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना PMMVY आई। हाँ, वो पहली डिलीवरी पर केंद्रित है। जी, तो हो सकता है उसका कुछ असर रहा हो या कुछ और प्रशासनिक कारण हो। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं? मुख्य बात ये कि कम से कम इस अध्ययन अवधि में JSY ने सीधे तौर पर अस्पताल डिलीवरी की दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन इसने लोगों की पसंद को सरकारी अस्पतालों की तरफ जरूर मोड़ा। बिल्कुल, और दरें बढ़ाने में असल भूमिका दूसरे कारकों की रही, जैसे आय का बढ़ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क और साक्षरता। तो इसके नीतिगत निहितार्थ क्या हैं? आगे क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि JSY लोगों को सरकारी सिस्टम की तरफ धकेल रही है, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ कैश ट्रांसफर पर निर्भर रहने की बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से जागरूकता और जुड़ाव बढ़ाना अहम है। और जो बाधाएं हैं, जैसे दूरी या सामाजिक आर्थिक कारक, उन्हें दूर करना होगा। जी, और क्योंकि परिवार के मुखिया की साक्षरता का असर दिखा है, तो पुरुषों को भी जागरूकता अभियानों में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। भारत ने वैसे मातृ मृत्यु दर कम करने में काफी प्रगति की है। हाँ, की है, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDG तक पहुंचने के लिए अभी इन सब पहलुओं पर काम करना होगा। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। इस गहरी पड़ताल के लिए लेखकों कृष्णा नायर और प्रोफेसर पुलक मिश्रा का एक बार फिर से धन्यवाद। जी बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगर अब हम ये देख रहे हैं कि जागरूकता और आय जैसे कारक डिलीवरी रेट बढ़ाने में नकद प्रोत्साहन से ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं और JSY का मुख्य असर अब सरकारी अस्पताल चुनने के लिए प्रेरित करना रह गया है, तो क्या भविष्य की नीतियों को सिर्फ इस व्यवहार के लिए सीधे पैसे देने पर कम ध्यान देना चाहिए और ज्यादा ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने और लोगों के समग्र स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर देना चाहिए? हाँ, सोचने वाली बात है कि संसाधनों का सबसे प्रभावी उपयोग कहाँ होगा।